let me break this myth that there is no quick money. If I'm telling no to this person, then I'm leaving money on the table. Since then, I'm doing freelancing since 2 years. ये स्टार्टिंग में हमको इतना मनी पे फोकस नहीं करना चाहिए. Hi everyone and welcome to my channel. So this is Ganesh here, and in today's video we have Arwa with us. So Arwa is a social media marketer and a content creator. And in this video we have discussed about what is social media marketing, how can you find clients as a social media marketer, how can you stay productive as a freelancer, and much more. So please make sure to watch the video till the end. Hi Arwa, so can you give a short introduction about yourself and take us through your journey? Like, how did you get into freelancing? Yes, sure. So thank you so much for having me on this podcast. So my journey as a freelancer started 2 years ago when I was in my 9 to 5 job, and I was very unsatisfied with my job. And I wanted to do something out of my job. So मैंने LinkedIn पे पोस्ट देखना चालू कर दिया था बहुत सारे लोगों के फ्रीलांसिंग रिलेटेड. तो तभी आइडिया आया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है एंड यू नो हाउ यू कैन अर्न मनी थ्रू फ्रीलांसिंग. So I myself started putting content out on LinkedIn. And I didn't know that, you could get clients just by posting content out of it. So I gained a lot of attraction through my stories and the way I used to craft my content. तो उससे मुझे फर्स्ट टू थ्री क्लाइंट्स मिल गए. तो वहां से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई. देन आफ्टर दैट, आफ्टर 6 months आई लेफ्ट माय जॉब एंड मैंने फ्रीलांसिंग फुल टाइम स्टार्ट कर दी. सिंस देन आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग सिंस 2 years. अमेजिंग. सो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या. सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड निश है. सो कैन यू एक्सप्लेन इन शॉर्ट कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर द ऑडियंस? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत वास्ट नीश है. अगर आप देखने जाओ कि आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल रहे हो तो वो बहुत एक जनरल टर्म हो गया. सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं. आप कौन से प्लेटफॉर्म्स टारगेट कर रहे हो, आपका गोल क्या है वो प्लेटफॉर्म यूज करने का, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो इंस्टाग्राम का एक फनल होता है. वहां पे अगर आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आप कौन से टाइप का कंटेंट बना रहे हो, तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी लगती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि डिफरेंट टाइप्स. आप ये बोल सकते हो कि हर एक प्लेटफॉर्म का हर एक अलग नीड होता है. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे ज्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता है एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वर्क्स बेस्ट ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स. अभी यूट्यूब शॉर्ट्स भी निकले हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी बहुत अट्रैक्शन आ गया है. बट आई फील लाइक every platform has their own strategy, and what is your goal, that should be defined very well in the beginning before using any platform. राइट, कंप्लीटली एग्री. एंड अभी बहुत सारे फ्रीलांसर को कंफ्यूजन होता है जब भी वो स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी. सो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है उनकी नीश के बारे में कि हमको नीश डिफाइन करना चाहिए, कौन सी नीश में मेरा इंटरेस्ट है. सो बहुत कंफ्यूजन होता है. तो अगर हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अपना नीश डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है? डेफिनेटली नीश एक ऐसी टॉपिक, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है. सो आई लाइक people keep asking me like how should I niche down, and people, when they are beginning, they always feel like, oh my god, if I'm telling no to this person, Right. then I'm leaving money on the table. I'm not, gaining money because I'm telling no to someone. So I'll give you an example of this. तो अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, राइट? एंड वो आपका काम 200-300 रुपीज में निपटा देता है. लेकिन अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है, आपको कोई ब्रेन सर्जरी करानी है, तो आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएंगे, राइट? तो वो हिसाब से अगर आप फ्रीलांसिंग को भी देखें, तो अगर आप एक स्पेसिफिक नीश में एक्सपर्ट बन जाते हो, इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन वन स्पेसिफिक टॉपिक और वन स्पेसिफिक सर्विस, then you will be known for that. For example, if अगर आप real estate business owners को target कर रहे हो and you are a graphic designer, so your service is also defined very clearly and your target audience is also defined very clearly. Now, अगर niche आपको spread out करना है तो starting में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि starting में आपको अपनी expertise बतानी पड़ेगी. Once you have that power, then you can scale your niche as well. राइट. ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है नीश के बारे में.
एंड उनको बहुत उनके अंदर एक माइंड ब्लॉक होता है कि हम लोग अगर एक नीश को स्पेसिफाई करें तो हम लोग बाकी की अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं, बट अगर वो एक नीश पे स्टिक exactly. रहते हैं तो उन लोग को हम लोग हाई चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि उनके पास वही नीच से रिलेटेड एक्सपर्टीज आ जाएंगी और उन लोग को केस स्टडीज भी बिल्ड करना पड़ेगा। फिर वो लोग एक सिस्टम बना के सारे क्लाइंट्स के लिए रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहे हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, सारे फ्रीलांसर्स को बिगिनिंग में होता है कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढे। What main problem today's freelancers face is that they are very good in what they are doing, but they don't know how to find clients. They don't know the राइट। business side of running a business. They don't know the operations side of it. राइट। So what I suggest is two things are very important to find clients. First thing is have a very strong portfolio. Even if you don't have any other skills or like communication भी आपका अच्छा नहीं है, तो आप portfolio अगर आपका strong होगा तो आपको client automatically मिलना चालू हो जाएंगे. And the second thing is how well you are in delivering the service. तो ये एक चीज है, वहां से अगर आपको first client suppose आपको locally मिल जाए, राइट। तो आपका फिर रेफरल सिस्टम चलता रहेगा एंड यू डोंट इवन हैव टू फोकस ऑन लीड जनरेशन. एंड आई वुड से कि अगर आप इनिशियल फेजेस में हो तो ट्राई टू पुट आउट मोर एंड मोर कंटेंट ऑन एफबी ग्रुप्स, ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम. Pick one or two platforms and try to put out content that showcases your results and showcases your portfolio. तो ये प्रोसेस से आपको फर्स्ट 2-3 क्लाइंट्स मिल जाएंगे. जो नेक्स्ट क्लाइंट्स मिलेंगे आपको वो डिपेंड करता है आप काम कैसे करते हो करंट क्लाइंट्स के लिए. राइट। राइट। इफ यू आर वर्किंग वेरी गुड तो आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स मिलते जाएंगे. राइट। अभी आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात की, सो पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है कि अगर कोई फ्रीलांसर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए? इज पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसर्स? So yeah, definitely. If I tell you that without personal branding, I won't have a freelancing business. So that is very true because I started out with my personal brand on राइट। LinkedIn. Personal brand क्या करता है, आपको differentiate करता है दूसरे लोगों से. So राइट। it is very important because also it shows your personality, why someone should hire you and not another random graphic designer or video editor. Personal राइट। branding helps you get that credibility and also helps you grow your career faster. राइट। बट बहुत सारे बिगनर्स को यही प्रॉब्लम आता है कि हमको ही अभी तक ये फील्ड के बारे में नहीं पता, सो हम लोग क्या कंटेंट क्रिएट करें? सो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो कि वो लोग क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते तो कंटेंट, आपको जो कंटेंट क्रिएट करना है वो आपको 3 एरियाज में करना है. आपके रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आप ला सकते हो वो क्लाइंट के लिए, और आपकी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए जो जो आपके टारगेट ऑडियंस को समझ आए. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टारगेटिंग कोचेस एंड हैं? कंसल्टेंट्स, राइट। my content should be related to what their pain points are. So not necessarily pain points also, but आप उनको क्या result provide कर सकते हो. तो content उसके around होना चाहिए. And 20% should be informative. राइट। Informative content में आप how to डाल सकते हो, tutorials डाल सकते हो. राइट। So 80% should be focusing on results and 20% should be like informative content. ओके। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहा है तो उसके स्किल्स इतने अच्छी नहीं होते, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स, सो वुड यू सजेस्ट समवन हु इज स्टार्टिंग आउट टू वर्क फॉर फ्री इन द बिगिनिंग टू गेन एक्सपीरियंस एंड गेट द एक्सपोजर ऑन हाउ टू वर्क विद क्लाइंट्स? तो अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, like if you're totally a newbie, then I would definitely recommend working for free, not for a very long time, but like 1 or 2 months is fine, or working at a very nominal or a very small price. Now, what this will do is this will give you like a lot of experience and exposure to the corporate world. So even when I was starting out, I am from an engineering background, so I didn't have that much of social media राइट। experience. So what I did was I took up 2 internships and every internship paid me like 4,000 rupees per ओके। month. And at that time, that was a lot of money for me because I was just beginning out, राइट। starting out. तो वो टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे पैसे हैं. हाँ। तो फिर उससे क्या हुआ, उससे मेरे को एक्सपीरियंस मिला कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम होता है, कैसे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इवन इफ in the beginning don't see the money or see what kind of work you're getting, just try to gain as much as experience as possible because
वो जो फर्स्ट 6 मंथ्स हो गए, वो उससे आपको पता चलेगा आपके स्किल्स किस में अच्छे हैं, क्या आपको पसंद है, आप क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे ले सकते हो। तो वो जो फर्स्ट 6 मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन एनी फ्रीलांसर्स लाइफ। दैट्स ये स्टार्टिंग में हमको इतना मनी पे फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे वैसे हमको हाई पेइंग क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में शिफ्ट कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में हम लोग हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं। बट फ्रीलांसिंग का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए हम लोग को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। क्लाइंट्स हमको डेडलाइन तो देते हैं कि 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, बट हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। So it is very important to be self-disciplined. So can you touch this point ki how can a freelancer be self-disciplined and productive? यस, तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जो आपको बेनिफिट्स भी है और प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। तो Right, कॉन्स ये है कि आपका कोई बॉस नहीं होता है फ्रीलांसिंग में, तो right, आपको सब चीजें खुद मैनेज करनी होती है। यू हैव टू मैनेज योर ओन टाइम, यू हैव टू मैनेज योर ओन शेड्यूल। So I would suggest have like a planning tool. So for example, I use Trello for all my clients, okay, and I plan out all my things one day prior to the day I have to submit things. right, So try to plan out things on a calendar, और आपको अगर लिख के अच्छा लगता है तो आप लिख के चीजें प्लान करो, या तो फिर देर आर सो मेनी ऑनलाइन टूल्स सच एज नोशन, ट्रेलो, एयरटेबल। आप कोई भी एक टूल सिलेक्ट करो और डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ विद टू मेनी टूल्स, बट एक टूल सिलेक्ट करो और उसमें लिस्ट ऑफ चीजें जो आपको करनी है वो प्लान कर दो नेक्स्ट डे के लिए। After that, you can also, plan according to your calendar, have a calendar link so that right. clients can book call। तो वो सब चीजें बहुत important होती है, and yeah, I think that's pretty much it। Okay. So what will be your final message to the audience? So yes, what I see in new freelancers is that they give up very easily, and everybody is running behind quick money. So let me break this myth that there is no quick money as such। You will have to build your skills over time, you will have to work hard, एंड जो धीरे धीरे करके आपको जो स्किल्स एड अप होती जाएगी उससे फिर आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिलेंगे। आप मेरे को भी फर्स्ट टाइम में कोई हाई टिकट क्लाइंट एक झटके में नहीं मिल गया। So Right. you don't have to run behind instant gratification. You have to, put in the work consistently, and over the period of time, you will achieve your goal। Okay. Thanks a lot, Arwa, for doing this. I'm sure कि audience को भी बहुत benefit होगा। आपने इतना अपना experience share किया, इतना insight share किया. So thanks a lot. And guys, if you have any questions for Arwa, you can simply reach out to her on her Instagram. I will add all her social media links in the description.